basically. It's down with a bit of viral. Sir, you're on mute, sir, I guess. Okay, thanks, Sakit. Hardik, any difficulty in joining? No, sir. You just called me. So what I'll do is I'll share the link here, right? Calling everybody will not be possible, so I'll just share the link in the chat. Also, sir, did you check our sessional papers? Yeah, which it is going through. A section is midway. After that, C will come. Okay. A section is midway crossed already. So I had shared the link in the chat. Yes, so any doubt up till now? Neeraj, Krishna, Hardik, Divyansh. No doubt, Last sir. time I think it was 2 3 days back since I had my last class. So it was on vapor absorption refrigeration system, right? So we had discussed two vapor absorption refrigeration system. I'm basically teaching from my home today. So in case if there is some noise, please bear with me. So on vapor absorption refrigeration system, we had discussed two types of vapor absorption refrigeration system. The first was simple ammonia vapor absorption refrigeration system, and the other was modified ammonia vapor absorption refrigeration system, right? So I think they were pretty clear, right? Any doubts on that? No doubts? So there is one more vapor absorption refrigeration system that is called as Electrolux refrigerator. Electrolux vapor absorption refrigeration system. तो इलेक्ट्रोलक्स वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम को आप लोग स्टडी करना. I'll put it in assignment. It will be part of assignment. It's a very simple theoretical discussion, very similar to the ammonia vapor absorption refrigeration system. So today I'll start up with a little complicated, much complicated part, which is called as the multi-stage vapor compression refrigeration system. So up till now हम लोगों ने क्या पढ़ा था? We had studied the simple vapor compression refrigeration system, right? So when I say, I'll just share my screen. Yes, hope my screen is visible to you all.
Yes, sir. Okay. Both sections are able to join comfortably, Amog and Hardik. Yes, sir. Both sections people are here. They are comfortable to join. Yes, sir. A and C is there, I guess. A and C, both are here. Na? Yes, sir. Right. So, since I'm not keeping a bit well, was down with viral, so I'm taking this joint class. And from tomorrow onwards, we'll try to take the numerical parts separately. There will be requiring much more effort. So today I'll be illustrating the theoretical part, right? So this is vapor absorption, vapor compression, refrigeration system, right? So this vapor compression refrigeration system is basically of two types. The one we had studied in the up till now, that is called as simple VCRS, simple vapor compression refrigeration system. And from today, the part we are going to study is called as compound vapor compression refrigeration system. So just to distinguish the two, I have discussed the vapor absorption refrigeration system in between, right? So I'll just explain what is simple VCRS, right? So in simple VCRS, what you had studied, you had seen that there is a evaporator. Then after evaporator, we have got a compressor. After compressor, we have got one condenser. And then what you had seen, after condenser, we have a receiver tank. After that, we have an expansion valve. And then the refrigerant goes back to the compressor. So this was the simple vapor compression refrigeration system. So I named it like this, say this is 1 to 2 evaporator, 2 to 3 is compressor, 3 to 4 is condenser, and 4 to 1 is, this is 4, and this is 1, this is expansion, right? So this was simple vapor compression refrigeration system. So we had seen what simple compression refrigeration system is. We had seen how it will be represented on the TS and pH diagram, and then we had taken multiple problems on this, right? Now, what is compound vapor compression refrigeration system, or we often call it as multi-stage, right? So now let us see uh, what is the basically limitation of this system, right? If you try to see what this compressor is doing over here is, this is evaporator pressure. So we had seen there is low pressure, we call it as the evaporator pressure, and this is high pressure, we call it as the condenser pressure, right? And what is the function of the compressor? It compresses the refrigerant to raise its pressure from the evaporator pressure to compressor pressure. Now, my question to you is, in case if PC upon PE, that is the ratio of the compressor pressure to the evaporator pressure, if this ratio is up to 4, normally we use the simple vapor compression refrigeration system. But if this ratio is much, much higher, say more than 4, 5, 6, 7, 8, then what will happen? We need to use a compressor of much higher capacity, right? If we are using a compressor of much higher capacity, means which can raise the pressure to a much higher value, then what are the consequences of that, right? So I think you guys will be able to understand, if one compressor is producing very high pressure ratio, then what will be the consequences of that will be, after compression, the temperature will be very, very high. If after compression, the temperature is very, very high, what it means that the lubricant, the lubrication system of the compressor
is subjected to very, very high temperature, and because of which the lubricant starts to what you can say disintegrate into its manufacturing components, into its constituting elements, right? Number two, I think you understand this work required to drive the compressor will be very, very high. So if you are using a single compressor to achieve a very high compression ratio, then this work will be very high, right? Number two, the temperature, high temperatures will be encountered. And because of these high temperatures, the lubricant will break down. Then what additional consequences are there? If you are using a single compressor of very high power, then I think you understand you need to have basically a compressor made up of very, very strong walls. The amount of material required will be much higher because vibrations will be much higher, which adds to the cost of the compressor. So increased vibrations, increased cost, more space requirement, higher temperature, breakup of lubrication system, very, very high work input required. These all disadvantages basically limit us to use the simple vapor compression system only up to situations where the pressure ratio PC by PE is up to 4. If this pressure ratio is beyond this, then what we do, we basically use two compressors. Compound VCRS means I am using two compressors, more than one, right? So let us see how do we do it, and let us see what are the various types of it, right? So let me just take you to my notes. Okay, I hope notes are visible. Yes, sir. Good, good. So this is compound vapor compression refrigeration system. So he has basically explained us here that what are the problems when you use a single compressor. The problems that I've discussed with you, that the compression work becomes very, very high. High compression discharge temperature may damage the lubrication system. Compressor has to be of robust construction so that the cylinder walls can withstand the pressure, which will certainly add to the capital cost. So in order to avoid these multiple problems, a sensible option is to use two or multi compressors, right? And how do we use them basically? So one compressor, so suppose you're using two compressors, then what we do, see here, the cylinders are arranged in series, one after the other. The gas after compression in the first cylinder and before entering into the next cylinder is cooled at constant pressure by some suitable method, which is called intercooling, right? So I'll just spend a minute to make you understand what is this intercooling and how it helps us, right? So let me again go to my whiteboard. Now see, what is intercooling? Now suppose you have, say this is the first compressor. Now what is happening over here? Ambient air is picked in. It is compressed in this primary compressor or the compressor number one. And this compressed air comes out of here at point two. This is point number one. So compressed ambient air at pressure one taken into the compressor. It is compressed to a high pressure represented by point two. Now what we do directly, instead of directly sending this compressed air to the second compressor, what we do, we use in between an instrument called as intercooler. Now this is the device called as intercooler. And after intercooler, so what intercooler basically does, it cools down the compressed air. So it lowers the temperature.
Let us say the temperature here is T1, right? So we understand that after compression, the temperature will rise to T2. Now this air is already at a very, very high temperature. You wanted to increase the pressure. The pressure here was P1, which was low, and by compression, I wanted to increase the pressure. But unfortunately, what has happened that the temperature has also increased. So what I do, I use a device called as intercooler. And what does intercooler does? So this is the intercooler. Clearly, the name itself suggests between two compressors, you are cooling the air, right? So what this intercooler does, this intercooler cools down the air at constant pressure. So it cools down the air. T3 is lower than T2, but at constant pressure. The pressure remains constant. So what does intercooler does? It cools the compressed air at constant pressure. Right? It cools the compressed air at constant pressure. And then what we do? Now this is the air which is at high pressure. It is compressed air, but it has got cooled down. Now what we do? Here I use the second compressor. So this is my second compressor. Again, the air gets compressed in the second compressor, C2. And now the compressed air can be taken out from here, right? So let us say this is point number 4. And now I am having, what is the situation here? If you see carefully, what is the situation here is now the temperature is T4 and the pressure is P4, which is very, very high pressure. So by using multi-stage compression, what I have done is I'm able to achieve very, very high pressure. But at the same time, this pressure P4 is very, very high. But at the same time, the temperature T4 is relatively lower. Why it is lower? Because in between, I used an intercooler. I cooled down the temperature of the compressed air from T2 to T3, right? So this is the scenario where a single compressor, instead of using a single compressor, we are using two compressors in series, right? And we use an intercooler in between the two compressors, right? So input air came at pressure P1, low pressure, got compressed to high pressure P2, right? Then at same pressure P2, it got cooled down into intercooler. Now pressure is P2 only, right? Same pressure, right? Since it is stage 3, so you can call P3 is equal to P2. And then when you do the second compression, you generate very high pressure, but still the air is relatively cool. So that is the advantage of multi-stage compression. Now, how does multi-stage compression helps us? I'm saying again air. Repeatedly, I'm saying again and again air. However, here we use the liquid refrigerant. So why I'm saying come again and again air? Because normally when we want to achieve very, very high pressurized air, we use this two-stage compression or multi-stage compression. So the same phenomena will be used here in multi-stage compression. अब ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग दिस इंटरकूलर अगर ये बात समझ आ गई तो आपको काफी कुछ समझ आ जाएगा एनीबॉडी इन द क्लास Mahesh, Tapan, Tejas, Neeraj, Amok. What is the advantage of using this intercooler in between two compressors? Anybody? Any idea? शायद आप लोगों ने कहीं पढ़ा हो आकाश अभिषेक आदित्य अल्तमेश any benefit of using intercooler within two compression two stages of compression no idea no issues now let us see So, yes
Yes, So please. randomness of air will be too much, and that would be dangerous for storing. May damage parts. Let us see. Let us see. Now, what is the advantage of this, right? Sir, to reduce temperature. So let us say that this is low pressure line. This is the high pressure line. And I think you guys understand that on the TS chart, as we move out, the pressure lines diverge. They diverge, right? So this is the low pressure line, PL, yani input pressure. This is the high pressure line, PH, yani the discharge pressure. And this in between line is called as the intermediate pressure line, PI. So what is intermediate is that I'm going from low pressure to the high pressure, but in between I'm attaining some intermediate pressure, P2. So my target is from P1, I want to go to P4, right? Or from P lower, I want to go to P higher. But the interstage pressure, that is what I achieve after first compressor, is called intermediate pressure, PI. Now, if you carefully try to see, the compression will be shown by a vertical line, right? We have seen this in Bell-Coleman cycle, that this is the compression 1 to 2, right? And then, so what will be the work done during the compressor? I think you guys will be able to understand. It will be H2 minus H1, right? The work done will be, so let me write down here. If I'm using a single compressor, the work done by the compressor will be H1 H2 minus H1, right? But if I'm going through two stages, then what will be the diagram? See this very, very carefully. अगर ये बात समझ आ गई, तो सब कुछ समझ आ गया. Now, in case so this is 1 to 2 is the situation when I'm using a single compressor, and the work done is H2 minus H1, right? Now, when I'm using two stages, so what will happen? 1, 2, intermediate. So this is 1, 2, intermediate. So this will be my work done in the first compressor. I changed the color so that I could distinguish. So 1 to I, this will be the first work done in the compressor. Then what you do intercooling. Intercooling matlab constant pressure पे temperature कम कर. अब constant pressure कौन सा है? ये PI. इस पे temperature कम होगा means from here actually I'll move down the curve at constant pressure, right? So this is the intercooler. And then you do second compression from 2 to 4, from T3 to T4. So then second compression will begin from here and it will go up till here. So this is now from intermediate to high pressure, right? Or I should say, now this is 1, 2, 3, or 4. Now, this vertical line was the scene when I was using a single compressor. And this red line is the scene when I'm using two-stage compression. So first compressor is 1 to intermediate, then intercooling along constant pressure, and then from intermediate to point 2 is the second compressor, right? So now what will be the work done in this case? I think you guys will be able to understand. It will be H2 minus, say this point is, what should I say? Okay, let us say, let me mark this point as A, and let us say this point is a B at intermediate pressure, right? So second stage के अंदर what will be the work done? ध्यान से देखना बच्चों. Now what will be the work done by the compressor? It will be H2 minus HB plus
Yes. Second क्या हो जाएगा बच्चे? HA minus H1. Any doubts in this? No, sir. So we have used two compressor. The first compressor, the work done by the first compressor will be HA minus H1, HA minus H1, and the second will be H2 minus HB. Now, can you tell me which of these two is more, this or this? Which of these two is more? So first one will be more. First one will be more, right? Why second will be less? Anybody? Seventh semester? So after cooling air, it is easy to compress it. So the physical understanding says that after cooling, what will happen? The thermal energy of the air will be reduced and it is easier to compress the air. Fine. In case if I look from the diagram, you see when you're using a single compressor, H2 minus H1 is the work done. And this part, HA minus H1 is common, right? What is the difference? The difference is when you are using a single compressor, this part is replaced by this part. And I hope you can see, since these constant pressure lines are diverging outward, the length of this line is more compared to the length of this line, right? So very, very smartly, by producing intercooling, by introducing this intercooling between the two stages of compression, I have moved toward the origin. And when I am moving towards the origin and then doing the second stage of compression, so I realize this H2 minus HB will be much, much less than the second part from here to here. बात समझ आ रही है क्या बच्चों? So this much work done is less than this work done. Why? Because जैसे जैसे हम बाहर जा रहे हैं, as I am moving away from the origin, these pressure lines are opening up. And when they will open up, this work done will increase. Am I clear? Seventh semester, Yes, sir. Yes, sir. right? So, in case if we had used just one stage and second stage, क्या कोई benefit होता हमें? नहीं. सारा का सारा benefit क्यों हुआ? Because of this intercooling, right? So merely replacing, देखो common sense क्या कहती है? आप एक compressor use करोगे और यहाँ पे आप दो कंप्रेसर यूज करते हो, तो कॉमन सेंस में ऐसा लगता है कि जब हम दो कंप्रेसर यूज कर रहे हैं तो दोनों बिजली खाएंगे और ज्यादा बिजली खाएंगे. Work required will be more, right, compared to a single compressor. But when you see technically what we have done by introducing an intercooler in between, we have basically reduced the amount of work required to drive these two compressors, right? So the modern trend is that instead of using a single stage compression, we always use a multi-stage compression along with intercooling. Done, bacho? Is it clear? Yes, sir. Now, what is undercooling? Basically, this compressed air is taken through this tank in a tube. And what is happening? Cold water is coming in and going out from here. So this cold water takes away the heat from this heated up coil. And that is how this air gets cooled up, right? So the theory of saving of work. So basically, I told you that this work done will be much, much higher. And we have reduced this work done. I hope this concept of reduction of work using two compressors is clear to all. Tell me in case if there is any doubt. Dhruv, No, sir. No doubt. Faizan, Hardik, Mahesh, understood nicely? Yes, sir. Nikhil, Neeraj, Yes. Parakrit, everybody? Satyen, Yes, sir. nice. So now let's me get back to the notes. Once you have understood that multi-stage is useful because we reduce the amount of work required to drive the system, right? So he has given multiple advantages of multi-stage compression. You can just go through that, right?
So you'll be able to understand exactly what I have just helped you understand. Now, what are the various vapor compression refrigeration system we use with multi-stage compression? So the first type है मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ and I'm taking you to a simpler type, which is the second one, right? So what it says here is, so the first type that we are going to study in a multi-stage vapor compression system is two-stage compression with water intercooler and liquid subcooler, right? ध्यान से समझना बच्चों, जहां पर लगे दिक्कत आ रही है, just stop me there. So now this is the line diagram of the system. So let us see what is happening. तो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम के क्या पार्ट होते हैं हमें पता ही है. इट इज इवेपोरेटर, compressor, condenser, and expansion, right? So we'll start from evaporator, then we'll go to compressor, then we'll go to condenser, and then we'll go to the expansion wall. Let us see the diagram, what it says. So this is the evaporator. From evaporator, we go to the compressor. And since it is a two-stage system, so I'm using first of all a low pressure compressor, then a water intercooler, and then a high pressure compressor. तो आपको समझ आ गया जो इतनी देर से पिछले 20 मिनट से मैं डिस्कस कर रहा था. So same thing, low pressure compressor, then a water cooler, then a high pressure compressor. अब क्या होगा, यहाँ से ये superheated vapor will be sent to the condenser, where the superheated refrigerant will be condensed into high pressure liquid. From there we sent it to a liquid subcooler. अच्छा ध्यान से देखो, अब मैं साथ की साथ table formation भी देखता हूँ. So this is the pH diagram, right? Now what is happening over here? Let us see. अगर ये एक साइकिल समझ आ गई तो आपको किसी भी साइकिल में डिफिकल्टी नहीं आएगी. Let us say, so this compression evaporator, right? So let us talk about the first compression 1 to 2. तो evaporator में liquid आया, 0.7 पे liquid आया, evaporator से circulate हुआ, vapor में convert हो गया. So at 0.1 I have got vapor. I am assuming, मान लिया कि drying vapor है, right? So at 0.1 it is drying vapor. 1 to 2 is compression. So what you are doing, from the lower pressure or the evaporator pressure, you compress the refrigerant to intermediate pressure, PI, right? So 1 to 2, it is isentropic compression. And what you do, from the evaporator pressure, the refrigerant vapor is compressed to intermediate pressure, PI or P2. This is P2 or P3. Now what you do, you introduce a water intercooler, जैसे अभी मैंने आपको white board पे समझाया. So water intercooler में क्या होगा, the temperature will drop from 2 to 3 at constant pressure, right? So this is the constant pressure line, and on the constant pressure line, the temperature will drop. And when the temperature drops, we move towards the liquid line. So you know on the pH diagram, this is the liquid curve, this is the vapor curve. And when you're cooling a liquid, so what will happen? From the vapor curve, we will start moving towards the liquid curve. So 2 to 3 is intercooling, means at constant pressure, the temperature drops from T2 to T3. Understood? Any doubts up till here, bachcho? No, sir. Good. Now, at point 3, the vapor goes into the high pressure compressor and it is compressed up to P4. So 3 से compression हुआ 4 तक. Again isentropic compression, 3 to 4, second compression. उसके बाद क्या होगा? अब condition आपको दिख ही रही है, 0.4 पे it is superheated vapor. The superheated vapor is sent to the condenser, where it condenses back to liquid at 0.5. तो अब क्या होगा, ध्यान से देखो, 0.4 से कंडेंसेशन करनी है कहां तक? सो सुपरहीटेड वेपर का पहले डी सुपरहीटिंग हुआ, इस पॉइंट पे क्या मिला? ड्राई वेपर. अब ड्राई वेपर का फेज चेंज, कंडेंसेशन हुआ
और 0.5 पे आपको मिल गया लिक्विड, प्योर लिक्विड, राइट। कंडेंसर के बाद 5 पॉइंट पे क्या है, प्योर लिक्विड, और प्योर लिक्विड कहाँ पे आएगा, लिक्विड लाइन पे। अब आपने क्या लगाया, 5 to 6 है लिक्विड सब कूलर, व्हाट यू आर डूइंग, सब कूलिंग, अंडर कूलिंग। तो क्या होगा, दोबारा से कांस्टेंट प्रेशर पे liquid will get undercooled. So for the first time, we are going into the subcooled zone. 5 to 6 is undercooling, right? Then 6 to 7 is expansion. Expansion का मतलब क्या हुआ, from higher pressure 6 condenser pressure PC or P6, we will throttle down, reduce the pressure to the evaporator pressure P7, and then 7 पॉइंट पे इवेपोरेटर में लिक्विड आया, यहाँ पे फूड आर्टिकल्स पड़े थे, हीट एब्जॉर्ब करी, एंड इट गोज टू 0.1। तो 7 to 1 लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके ड्राई वेपर बना। सो दिस इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन द इवेपोरेटर। तो अगर मैं यहां से देख के आपको पूछूं कि व्हाट इज द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो आप बोल सकते हो दिस इज H1 minus H7। अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वर्क डन, नाउ द वर्क डन इज इन compressor number 1 plus compressor number 2. So I can comfortably say from the figure H2 minus H1 is the work done in the low pressure compressor, plus H4 minus H3 is the work done in the high pressure compressor. तो total work done क्या हो जाएगा, H2 minus H1 plus H4 minus H3, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, H1 minus H7, and COP will become refrigeration effect upon work done. टेल मी बच्चों, ये साइकिल समझ आई क्या? Yes, sir. Yes, Okay, sir. very happy to see. So just can I see how many people, can you just raise your hand and confirm कितने लोगों को ये समझ आ गया? Good, good. कुछ ही लोगों को आया है समझ. Just very few people have been able to understand. Good, Hardik. Very nice. Very nice. Okay. तो हाँ, yes, any doubts? Or shall I repeat it once? चल, मैं एक Yes, बार sir. मैं एक बार क्विक रिकैप देता हूँ ताकि आपको समझ आए. तो देखो बच्चों, मैंने अभी तक आपको क्या बात बताई, बहुत सिंपल बात बताई कि सिंपल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या होता था, इवेपोरेटर, फिर कंप्रेसर, फिर कंडेंसर, और फिर एक्सपेंशन वाल्व. अब हम कहा जा रहे हैं टू स्टेज कंप्रेशन पे. तो टू स्टेज कंप्रेशन की जो पहली साइकिल हमने पढ़ी वो क्या है, इट इज टू स्टेज वेपर कंप्रेशन refrigeration system with water intercooler and liquid subcooler. दो एडिशनल कंपोनेंट मैंने लगाए, देखते हैं वो क्या क्या है. तो पहला तो टू स्टेज कंप्रेशन है, तो दो कंप्रेसर होंगे. तो इवेपोरेटर के बाद दो कंप्रेसर आ गए, उसके बाद कंडेंसर आ गया, उसके बाद एक्सपेंशन वाल्व आ गया. और इसके अलावा मैंने क्या लगाया, एक वाटर इंटरकूलर लगाया, जो अब आपको पता लग गया कि अगर दो कंप्रेसर है तो बीच में इंटरकूलर तो लगेगा. और सेकेंड चीज आपको मैंने एक्स्ट्रा लगाई, लिक्विड सब. काफी बच्चों को जिन्होंने ढंग से अब तक पढ़ाई करी है उनको ये चीज समझ आई होगी कि वाटर इंटरकूलर क्यों जरूरी है जो मैंने बताया, और वो ये भी समझ गए होंगे कि लिक्विड सब कूलर के क्या फायदे हैं, राइट. मैं एक बार प्रोसेस पूरा दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ. सो 1 to 2 कंप्रेशन. 1, let us say after evaporator this is dry saturated vapor. So 1 to 2, it is the first compression. So 0.2 is superheated vapor. Then what I do, I send the superheated vapor to liquid intercooler, water intercooler. So with the help of cooling water, what do we cool the superheated vapor back towards dry vapor. So 2 to 3 is intercooling. Then what I do, 3 to 4 is second stage of compression. So after intercooling, the condition of the vapor is represented by 0.3. 3 to 4 is the second compressor. Again, you see 0.4 is a superheated vapor.
Now what you do, 4 to 5 is condensation. So from 4, first of all, de-superheating, और वेपर, सुपरहीटेड वेपर कन्वर्ट हो गया ड्राई में, एंड देन कंडेंसेशन, ड्राई वेपर कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड लिक्विड में. आपको पता है वेपर लाइन है तो इसके ऊपर ड्राई वेपर है, और वेपर धीरे धीरे कन्वर्ट होगा लिक्विड में. ये लिक्विड लाइन है तो यहाँ पे 0.5 पे लिक्विड आ गया. अब अगर हम डायरेक्टली एक्सपेंशन वाल्व लगाते तो इस पॉइंट से नीचे एक्सपेंशन होता 5 से, लेकिन हमने लिक्विड सब कूलर लगाया, राइट. और सब कूलर ने क्या करा, इस कंडेंसर के बाद जो लिक्विड आया था उसको सैचुरेशन टेम्परेचर से नीचे कूल कर दिया. सो 5 to 6 is at constant pressure we have gone into the subcooled liquid zone, and then 6 to 7 is expansion. Expansion means high pressure condenser pressure से रेफ्रिजरेंट को हम ले आए इवेपोरेटर प्रेशर पे, एंड देन 7 to 1 इज इवेपोरेटर. यानी कि 0.7 पे अब ये लिक्विड इवेपोरेटर के थ्रू सर्कुलेट करा हमने, उसने फूड आर्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करी, धीरे धीरे वो लिक्विड इवेपोरेट हो गया ड्राई वेपर में, एंड वी रीच बैक टू 0.1, राइट. So this was all about the working of this cycle. I think you guys will be easily able to understand कि यहाँ से जो मास चला वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है, वही यहाँ पे है. Throughout the cycle same mass flow rate चल रहा है m. So throughout the cycle the mass flow rate is same, right? इसका मतलब अगर मैं आपसे पूछूं या कोई भी पूछे कि इस साइकिल का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, तो आई थिंक आप बोल सकते हो m h1 minus h7 is the total refrigeration effect, right? यानी कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ इवेपोरेटर में, फूड आर्टिकल से कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ. अब अगर कोई आपसे पूछे कि ये मास फ्लो रेट कैसे निकालोगे, राइट? अगर मुझे मशीन का रेफ्रिजरेटर का टनेज पता हो, Q टन्स है, तो what I can do, that Q tons will be equal to m into h1 minus h6. From here I can calculate the mass of the refrigerant. So mass of the refrigerant will be 3.5 Q, ये W नहीं है, Q है, upon H1 minus H6. इस मास के साथ आपने H1 minus H7 को मल्टीप्लाई करा तो आपको मिल गया रेफ्रिजरेशन इफेक्ट. अब अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज द वर्क डन, सो वर्क डन इज हियर प्लस हियर, राइट? सो इट इज वर्क इन LP, लो प्रेशर कंप्रेसर. सो दिस इज H2 minus H1. मेरे ख्याल से आप समझ रहे हो, total work done in the low pressure compressor will be m multiplied by H2 minus H1, plus work done in the high pressure compressor will be 3 to 4 m into H4 minus H3. तो important बात क्या है बच्चों कि जब आपके सामने न्यूमेरिकल आया, और अगर न्यूमेरिकल आते ही आपके सामने माइंड में ये लाइन डायग्राम बन गया, तो आप देखोगे इस लाइन डायग्राम के बनते ही ये pH डायग्राम अपने आप बन जाएगा. यस और नो बच्चों? यस सर. और अगर ये pH डायग्राम आपका बन गया तो यहाँ से हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, वर्क डन निकाल सकते हैं, और फिर हम COP निकाल सकते हैं, राइट? COP विल बी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क डन. एनी डाउट्स ऑन दिस टू एनीबॉडी? नो सर, नो डाउट. Good. Now we will go one step ahead and we'll see another cycle, which is two-stage vapor compression refrigeration system with water intercooler, liquid subcooler, and liquid flash chamber, right? Very very important cycle. अब यहाँ पे क्या हुआ, सेम साइकिल है, वाटर कूलर, वाटर इंटरकूलर तो वैसे ही आ गया, लिक्विड सबकूलर भी वैसे ही आ गया, लेकिन साथ में हमने लगाया लिक्विड फ्लैश चैम्बर. बड़ी बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आप इसको समझ पाए, ये लिक्विड फ्लैश चैम्बर ये लगाया, ये क्या चीज है, राइट? ध्यान से देखना बच्चों, और ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश करना. 0.7 पे तेजस, महीश, तपन, नीरज, अमोघ,
Satyen, Saket, all are with me? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Good. ध्यान से समझने की कोशिश करना, इवेपोरेटर के अंदर जब रेफ्रिजरेंट जा रहा है, इट इज एट 0.7 एंड फ्रॉम द चार्ट आई सी एट 0.7 इट इज नॉट प्योर लिक्विड. अगर ये 0.7 लिक्विड लाइन के ऊपर होता तो ये प्योर लिक्विड होता बच्चों. यस और नो? Yes, sir. हाँ सर. नाउ अब ध्यान से देखो, इवेपोरेटर का काम क्या है. अगर लिक्विड जाएगा, इवेपोरेटर में फूड आर्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करेगा, लिक्विड लेटेंट हीट एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? तो इवेपोरेटर में लिक्विड जाए उसी का फायदा है ना. लेकिन यहां पर क्या जा रहा है, लिक्विड प्लस वेपर. मान लो आपने 1 किलोग्राम लिक्विड भेजना था, लेकिन अब ये 1 किलोग्राम लिक्विड नहीं है, ये है सपोज 75 750 ग्राम लिक्विड है और 250 ग्राम वेपर है. अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 250 ग्राम वेपर अंदर गया, या क्या ये कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा? नो. सारी हीट कौन एब्जॉर्ब करेगा? लिक्विड, एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू वेपर. सो व्हाट आई मीन टू से, ध्यान से समझना बच्चों, रेफ्रिजरेंट, लिक्विड रेफ्रिजरेंट अगर इवेपोरेटर में जाए तो ही हमें फायदा होता है. लिक्विड रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में गया, उसने फूड आर्टिकल से हीट एब्जॉर्ब करी, और कौन सी हीट एब्जॉर्ब करी? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और वो वेपर में कन्वर्ट हो गया. अगर हम लिक्विड प्लस वेपर को भेज रहे हैं, तो ये जो थोड़ा सा वेपर है, क्या ये अंदर जाके कोई हीट एब्जॉर्ब करेगा? नो. तो इस वेपर को भेज के कोई फायदा तो हुआ नहीं हमें. तो इस वेपर को भेजना ही क्यों है अंदर? इस वेपर को भेजने के कारण क्या हुआ? मुझे बड़ी ट्यूब्स यूज करनी पड़ी, ज्यादा साइज की, बड़ा इवेपोरेटर यूज करना पड़ा. तो फ्लैश चैम्बर क्या करता है, 0.7 पे वेपर को अलग कर देगा, लिक्विड को अलग कर देगा, और सिर्फ लिक्विड को ही इवेपोरेटर में भेजेगा. मेरी बात समझ आई बच्चों? बी विद मी, मुझको Yes, sir. बताते चलिए. मेरी बात समझ आई, राइट? Yes, Yes, sir. sir. गुड. तो अब फ्लैश चैम्बर ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड को आगे भेजेगा. देखते हैं. तो अब लिक्विड सब कूलर 6 to 7, पूरी साइकिल बताता हूँ. 1 to 2 कंप्रेशन, 1 to 2 कंप्रेशन, 2 to 3 इंटरकूलिंग, 2 to 3 थोड़ा ठंडा हो गया, 3 to 4 अभी ये बाद में डिस्कस करता हूँ क्योंकि फ्लैश चैम्बर आ जाएगा. फिर 4 to 5 सेकेंड कंप्रेशन, 5 to 6 कंडेंसर, 5 से चले 6 लिक्विड कंडेंसर, 6 to 7 क्या है, लिक्विड सब कूलर, सब कूलिंग कर दी. 6 to 7 अब मैं सब कूल लिक्विड बन गया. अब 7 to 8 क्या हुआ, एक्सपेंशन. इस 0.7 से एक्सपेंशन हुआ 8 तक, और 0.8 पे आपको पता है 0.8 की कंडीशन क्या है, महीश, तपन, ध्यान से देखना. 0.8 की कंडीशन क्या है? इट इज लाइंग इन बिटवीन द Sir. लिक्विड लाइन एंड द वेपर लाइन. इट इज वेट वेपर, देयर इज सम वेपर एंड सम लिक्विड, राइट? तो अब इस फ्लैश चैम्बर ने क्या करा, वेपर को अलग करा और वेपर को ऊपर भेज दिया, लिक्विड को अलग करा और लिक्विड को आगे भेजा इवेपोरेटर में. मेरी बात समझ आई क्या? तो फ्लैश चैम्बर ने क्या करा, देखो, लिक्विड को अलग करा 0.10, 8 से लिक्विड आया 10 पे, ये लिक्विड लाइन पे आ गया 10 पे, और 10 से हुआ सेकेंड एक्सपेंशन 11. 10 to 11 इज द सेकेंड एक्सपेंशन. अब 11 से हमने गए इवेपोरेटर, राइट? आपके मन में क्वेश्चन आ सकता था कि सर 0.11 पे तो अभी भी प्योर लिक्विड नहीं है, थोड़ा सा वेपर तो अभी भी है. लेकिन अगर आप ध्यान से देखो, अगर हम यहाँ फ्लैश चैम्बर नहीं यूज करते तो 0.7 से एक्सपेंशन होके मैं यहाँ पे आता, और यहाँ पे कितना वेपर है, बहुत ज्यादा. लेकिन फ्लैश चैम्बर यूज करने के कारण अब मैं 0.11 पे आके इवेपोरेटर में जा रहा हूं, तो आप देख रहे हो लिक्विड बढ़ गया. ये सर दो बच्चों, Yes, sir. Yes, sir. समझ आ रही है क्या बात?
या ज्यादा हो गया, गहरा हो गया? कितने लोगों को ये बात समझ आई? समझ आ रही है। रेज योर हैंड्स प्लीज, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल हैव अंडरस्टूड इट। ऋषिराज समझ आ रहा है? Yes, sir. गुड। तेजस, साकेत, कृष्णा, राज, महीश, तौसीफ, नीरज गुड, Yes, sir. केशव Yes, गुड, sir. हार्दिक गुड, यश गुड, राजन गुड, फाइन, गिरीक को भी समझ आ रहा है, वेरी नाइस। आकाश, ऊपर से निकल गया क्या सारा? निखिल, मयंक, नाइस, ओके। देखो, थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी समझने के लिए। द पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर मैं ये फ्लैश चैम्बर यूज नहीं करता तो पुरानी साइकिल हो जाती, जो अभी हमने साइकिल पढ़ी, जिसमें वाटर कूलर था और सब कूलर था, लिक्विड सब कूलर था। तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ 0.6 से सीधा एक्सपेंशन होके मैं यहाँ पे आता था, तो 0.8 के वर्टिकली नीचे, और यहाँ से रेफ्रिजरेंट इवेपोरेटर में जा रहा है। जब मैं यहां से जा रहा हूं तो आप देखो 50%, 40% तो वेपर है, 60% लिक्विड है, राइट? अंदाजन approximately this point is in the center of the liquid line and the vapor line. It means nearly half is the vapor and half is the liquid. तो आधा लिक्विड जो जाएगा सिर्फ वही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो पहले वाली साइकिल को इंप्रूव करने के लिए मैंने क्या करा, फ्लैश चैम्बर लगाया। फ्लैश चैम्बर ने क्या करा, 8 पॉइंट से लिक्विड को अलग करा 10 पे, और वो लिक्विड को फिर हमने प्रेशर रिड्यूस करा, इंटरमीडिएट प्रेशर पे है ना फ्लैश चैम्बर, फिर प्रेशर रिड्यूस करा। अब 0.11 वाले रेफ्रिजरेंट को हमने इवेपोरेटर में भेजा। तो अगर आप देखोगे तो अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है H1 माइनस H11। पहले की सिचुएशन में अगर आप देखते तो क्या होता है, H1 माइनस ये H8, ये वाला पॉइंट। तो आप देख रहे हो, बाय यूजिंग द फ्लैश चैम्बर एक्चुअली आई हैव इंक्रीज द रेफ्रिजरेशन। मेरी बात समझ आ रही है क्या बच्चों? सर मेरे को एक डाउट है। हाँ पूछो। सर ये जो हम फ्लैश चेम्बर से सर ऊपर भेज रहे हैं सर, इसको इंटरकूल क्यों नहीं करते सर? उससे पहले अभी रुको, ध्यान से देखते हैं। अभी क्या हुआ, हमने ये लिक्विड वाला पार्ट देखा। अब जो यहाँ पे फ्लैश चैम्बर से वेपर अलग हुआ था, उसको हमने क्या करा, ये वेपर को हमने ऊपर भेज दिया और ये मिक्स हुआ पॉइंट नंबर 3। देखो, लेट अस सी, 1 to 2 is compression, 1 to 2 is compression, 2 to 3 is water intercooling। तो वेपर थोड़ा सा ठंडा हुआ। 0.3 के वेपर को हमने 0.9 के वेपर से मिक्स करा। 0.3 के वेपर को यहां से 0.8 से 9 वेपर अलग हुआ, 8 से वेपर अलग होके आया 9 पे। 9 वाले वेपर को 3 वाले वेपर से मिक्स करा। 3 वाला वेपर अभी भी सुपर हीटेड है, 9 वाला वेपर क्या है, ड्राई सैचुरेटेड। तो 3 और 9 वाले वेपर को जब मिक्स करा तो मिक्स होने के बाद स्टेट आई 4। ये 3 वाला वेपर 9 वाले वेपर के साथ मिक्स होके ठंडा हो जाता है, या यूं कहूं 9 वाला ड्राई सैचुरेटेड वेपर 3 पॉइंट के सुपरहीटेड वेपर के साथ मिक्सअप होके इसे थोड़ा सा कूल डाउन करता है, एंड वी गेट 0.4। देखो ध्यान से समझना, वाटर इंटरकूलर ने क्या करा बच्चों, 2 से टेम्परेचर को घटाया 3 पे, और जब ये वेपर 9 वाला 3 के साथ मिक्स हुआ, उसने दोबारा से वही काम करा वाटर इंटरकूलर का। यानी नाउ आई हैव गॉट अ स्ट्रॉन्ग वाटर इंटरकूलर, और वेपर ठंडा होके 0.4 पे आया। यहां से कंप्रेस करना आसान है। अगर मैं 0.3 से कंप्रेस करता ज्यादा वर्क लगता, 0.4 से कंप्रेस कर रहा हूं कम वर्क लग रहा है। यहां से देखो, यहां से कंप्रेस करना में वर्क कम लगा, राइट? तो इंटरकूलिंग बेटर हो गई इस मिक्सिंग के कारण। आई थिंक तेजस साहब, आपको मेरी बात समझ आई? हाँ जी सर। राइट? सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द साइकिल। तो वाटर इंटरकूलर प्लस लिक्विड सबकूलर के बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लिक्विड सबकूलर के। लेकिन अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को और बढ़ाना है तो एक फ्लैश चैम्बर और लगाए। और पहली बार आपने ये देखा, ये जो सेपरेशन हुआ, लिक्विड इधर गया 10 पे, वेपर इधर गया 9 पे, ये पहली बार आपने सेपरेशन देखा, विच इज डन विद द हेल्प ऑफ फ्लैश चैम्बर, राइट?
अभी फ्लैश चैम्बर होता क्या है बेसिकली? इट इज जस्ट अ टैंक, इंसुलेटेड टैंक, इट इज कंप्लीटली इंसुलेटेड। तो उस टैंक में लिक्विड नीचे बैठ जाता है, वेपर ऊपर इकट्ठा हो जाता है। वेपर ऊपर इकट्ठा हुआ है क्योंकि वेपर हल्का है, इट हैज अ टेंडेंसी टू राइज अप। लिक्विड सेटल डाउन, इट हैज अ टेंडेंसी टू फ्लो डाउन, राइट? तो ऑटोमेटिकली वेपर अलग हो जाता है, लिक्विड अलग हो जाता है। लेकिन अब अगर आपसे कोई ध्यान से पूछे क्या यहाँ पर इस लूप में जो मास फ्लो रेट है और इस लूप में जो मास फ्लो रेट है वो सेम है? नो। इस लूप में सपोज मास फ्लो रेट है m1 और इस लूप में सपोज मास फ्लो रेट है m2, है ना? मास फ्लो रेट अलग अलग है बच्चों, है ना? यहां से जो मास फ्लो होके आया, देखो m1 आया, इधर से कुछ वेपर सेपरेट हुआ m3, m1 के साथ जुड़ा तो मास फ्लो रेट बना m2। यानी सेकेंड वेव कंप्रेसर में ज्यादा मास फ्लो रेट चल रहा है। m3 is the mass of the vapor separated from the flash chamber. m1 is the mass of the refrigerant being circulated through the evaporator. me, mass of the refrigerant flowing through the evaporator, we normally call it as m1, plus m3. What is m3? Mass of the vapor separated by the flash chamber. They two add together and it becomes m2. And what is m2? The mass flowing through the condenser or the mass flowing through the high pressure compressor. Got it? Now अगर मैं आपसे पूछूं इन masses को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हमें फ्लैश चैम्बर के ऊपर मास बैलेंस लगाना पड़ेगा। और फ्लैश चैम्बर के ऊपर अगर मास बैलेंस लगाना है, बहुत ध्यान से देखना बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो 0.8 पे मास अंदर आ रहा है, 0.9 पे मास बाहर जा रहा है, 0.10 पे मास बाहर जा रहा है। इस फ्लैश चैम्बर के अंदर देयर इज वन एंट्री H8, M2 into H8 is the mass flow rate moving in the total energy कितनी हुई? M2 into H8 which is going into the flash. M3 into H9 is the energy going out plus M1 into H10 is the energy going out towards the evaporator, right? तो ये सारे ऑपरेशन उसने बनाए, 1 2 3 फर्स्ट आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, 2 to 3 कूलिंग और डी सुपर हीटिंग, फिर 3 to 4 उसने बताया मिक्सिंग हुई, किसकी? सुपरहीटेड वेपर की सैचुरेटेड वेपर सप्लाइड बाय द फ्लैश चैम्बर। फिर 4 to 5 सेकेंड आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, फिर 5 to 6 कंडेंसेशन, 6 to 7 सब कूलिंग, 7 to 8 फर्स्ट एक्सपेंशन, 8 to 9 क्या है? वेपर सेपरेशन, 8 to 10 क्या है? लिक्विड सेपरेशन, फिर 10 11 से 1 क्या हुआ? दूसरा एक्सपेंशन और उसके बाद इवेपोरेशन, राइट? अब मैं आपको बता रहा था एंथैल्पी बैलेंस। सो M2 into H8 is the total energy entering the flash chamber. Heat supplied to the flash chamber is mass is M2, enthalpy is H8, and heat taken away is M3 H9, that is vapor, plus M1 H10, it is the liquid. And from here I'll get the relation between M2 and M3, right? So once I get M2 and M3, I can also get M1. Got it? So अब मैं अगर आपसे पूछूं what is the refrigeration effect? What is the refrigeration effect? So the refrigeration effect is M1. इस लूप में मास फ्लो रेट M1 है, M1 into H1 minus H11. और अगर मैं आपसे पूछूं वर्क डन क्या है? M1 into H2 minus H1 plus M2 into H5 minus H4. यहां पे कौन सा मास फ्लो रेट है? M1. यहां पे कौन सा मास फ्लो रेट है? M2. बात समझ आ रही है क्या बच्चों? Yes, sir. 7th सेमेस्टर अश्विन अपूर, थोड़ा सा डीप टॉपिक है, बट अब हम 7th सेमेस्टर में है तो कुछ डीप डिस्कशन तो होगी। आकाश, अरुण, आयुष, तपन, तेजस, महेश, ऋषिराज, निखिल, निखिल सोनी, नीरज, सबको बात समझ आई क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. I think अगर आपके पास notes होंगे, once you will go through the notes and then tomorrow individually, if my health permits tomorrow, then individually I will discuss
one numerical on both cycles, right? So what I'll do is I'll share the notes today, right? So go through these notes meticulously in dono cycles, okay? And then we'll come back tomorrow. So don't come to the class playing without studying. It will have no impact. It will have no value. If you really want to add value, you need to go through the topic and then come to the class tomorrow. Right? Is it fine, Bacho? Hope you enjoyed this lecture. Yes, Hope sir. it was knowledgeable and it was useful, right? So I'll stop here for today and I'll share these notes with you all, which you can comfortably And go through. sir, the Yes. last recording you shared, it's not downloadable. So maybe you need to allow it to us to download it. No issues, no issues. I'll just try to give you those permissions, right? And so So same with this recording as well. same with Today's recording as well. today's recording. आज हमने C section की टीम में मीटिंग करा है तो C को तो होगा शायद आपको नहीं होगा. Don't हाँ. worry. From C you can take it or I'll just see can I give you the permissions, right? Okay, thank you, sir. So थोड़ा सा deep topic है, needs a bit of your effort and manner, but I have tried to explain it to the best of my capacity, right? Hope you find this lecture enjoyable and useful. So we'll see you back tomorrow and we'll take up few numerical practice on this. तो कल आप लोग अपने स्केल्स, वाइट पेजेस, कैलकुलेटर्स, रेफ्रिजरेशन टेबल्स इस सब के साथ आना. हमें पीएच चार्ट्स की जरूरत पड़ेगी. कैसे न्यूमेरिकल करना है कल इंडिविजुअली कोशिश करूंगा दोनों क्लासेस में करना, राइट? इफ माय हेल्थ परमिट्स, फॉर श्योर. सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. सी यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम बच्चे, मोस्ट वेलकम. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम. Thank you, sir. मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम.